Hello students and welcome back to my channel. Today we are going to see exercise 4.5 in which we are going to study how to find adjoint of a matrix. Students, in the previous lecture if you remember we have studied how to find minors and cofactors. तो आज उसकी मदद से हम लोग सीखेंगे how to find adjoint of a matrix. So let's begin. Students, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि what is a cofactor matrix. As the name suggests cofactor, तो आपको क्या लगता है cofactor matrix क्या होगा? इट इज़ अ मैट्रिक्स इन्वॉल्विंग द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स. तो अगर हम लोग एलिमेंट्स की जगह पे उनके कोफैक्टर्स लिख देते हैं तो वो बन जाता है कोफैक्टर मैट्रिक्स. ओके, एज वी कैन सी ओवर हियर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2x2 जिसमें कि 4 एलिमेंट्स होते हैं. ओके, सो मैं एलिमेंट A11 नहीं लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, उसका कोफैक्टर लिख रहा हूँ, कैपिटल A11. आई एम नॉट राइटिंग एलिमेंट A12, आई एम राइटिंग व्हाट, इट्स कोफैक्टर विच इज कैपिटल A12. लाइकवाइज हर एक एलिमेंट के हम लोग क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, तो वो बन जाता है कोफैक्टर मैट्रिक्स. लाइकवाइज आप यहाँ पे देख सकते हो अगर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसमें एलिमेंट्स की जगह पे हम लोग उसके कोफैक्टर्स लिख देंगे तो वो बन जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3x3. क्लियर, समझ में आ रहा है? नाउ लेट्स मूव अहेड टू व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, द सिंबल इज, यू कैन राइट इन द शॉर्ट फॉर्म ADJ of A. Okay, so it is the transpose of the cofactor matrix. Once again I repeat, what is adjoint of A? It is a transpose of the cofactor matrix. तो we have already seen how to find cofactor matrix. तो अगर मैंने उसका ट्रांसपोज ले लिया, अगर हम 2x2 की बात करें, ओके, सो इफ आई एम गोइंग टू टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो व्हाट विल हैपन इन ट्रांसपोज स्टूडेंट्स, इंटरचेंजिंग द रोज एंड द कॉलम्स. तो जो फर्स्ट रो है वो क्या बन जाता है, फर्स्ट कॉलम. जो सेकेंड रो है वो क्या बन जाता है, सेकेंड कॉलम. ओके, सो लाइकवाइज इफ आई टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है वो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, द सेकेंड रो इज गोइंग टू बिकम द सेकेंड कॉलम. सो दैट्स हाउ यू ऑब्टेन दिस एडजॉइंट ऑफ ए, डिनोटेड बाय ADJ ऑफ ए. लाइकवाइज 3x3 का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज ले लो. ओके, सो जो फर्स्ट रो है वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम, the second row becomes the second column, the third row becomes the third column. Okay, so let's begin the first question of exercise 4.5, and the question is as follows. Find the adjoint of each of the following matrices. So we have been given a matrix of the order 2x2. Clear? तो आपको क्या फाइंड करना है, adjoint of A फाइंड करना है. तो how do you start the sum? Let A is equal to the given matrix, नामकरण कर लिया उसका. Okay, then we are finding the cofactors of all the 4 elements. स्टूडेंट्स, आपको याद है कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या था, AIJ इज इक्वल टू -1/i+j इंटू MIJ, वे व्हाट इज MIJ, इट इज अ माइनर ऑफ द एलिमेंट. क्लियर, ये अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो यू कैन रिफर माई लेक्चर नंबर 3 वेर आई हैव एक्सप्लेन्ड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैसे फाइंड किया जाता है. ओके, नाउ वी आर बिगिनिंग विद द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A11. इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल A11 विच इज -1/1 + 1 इंटू M11. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि 2x2 मैट्रिक्स का माइनर्स कैसे निकाला जाता है. इफ़ यू वांट टू फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट A11, इट इज द डायगनली ऑपोजिट एलिमेंट, राइट. तो इसका डायगनली ऑपोजिट एलिमेंट कौन सा है, 4. तो आई एम गोइंग टू राइट M11 एज 4. नाउ यू नो नेगेटिव 1 / इवन पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये एक्चुअली क्या है, -1 का स्क्वायर इंटू 4 विच इज 1 × 4 विच इज 4. सिंपल. लाइकवाइज यू गो फॉर द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A12, फॉर्मूला में पुट करो, सो यू गेट -1/1 + 2 इंटू M12. नाउ व्हाट इज द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, इसका डायगनली ऑपोजिट एलिमेंट जो है 3, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 3. -1/3 इंटू 3. नाउ दिस इज एक्चुअली -1, -1 इंटू 3 becomes -3. Okay, moving ahead, you want to find the cofactor of the element A21. So in the formula you are going to put -1/2 + 1 into M21. इसका माइनर कौन सा है, 2. So you get -1/3 into 2. This is actually -1. -1 into 2 becomes -2. Likewise, moving ahead for the fourth element, A22. So -1/2 + 2 into M22. -1 / even power becomes +1. So 1 into 1, your answer is 1. Now students, you have found out all the 4 cofactors. तो adjoint of A का फॉर्मूला लिख लो. Okay, so don't forget to take the transpose of the cofactor matrix. बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक ये कर देते हैं कि ये मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज पुट करके आ जाते हैं. ओके, सो डोंट डू दैट मिस्टेक. यू हैव टू टेक द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड देन पुट द वैल्यूज. ओके, सो नाउ A11 का जो वैल्यू है वो है 4, A12 का वैल्यू है -3,
A21 का वैल्यू है -2 एंड A22 का वैल्यू है 1. Simple? Okay, so let's move to the second question. Same thing you have to do. You have to find the adjoint of this matrix. सिर्फ फर्क इतना है कि this is a 3/3 matrix. Okay, so again we write a formula for the cofactor -1 raised to I plus j into mij. Now beginning with finding the cofactors of all the 9 elements. So A11 means what? Cofactor of the element A11, which is -1 raised to 1 plus 1 into M11. Now students, I hope you remember how to find the minors of all the elements in the matrix 3/3. क्या करेंगे, वो जहाँ पे भी वो लाई कर रहा है, मीन्स द रो एंड द कॉलम वेर इट इज लाइंग, यू आर जस्ट गोइंग टू कवर इट. तो जैसे कि एलिमेंट A11 इट इज लाइंग इन द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम, सो आई एम जस्ट गोइंग टू कवर दैट. तो मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 4 एलिमेंट्स मिलेगा. सो यू आर गोइंग टू गेट दैट. सो यू गेट -1 raised to 2 into expand the determinant, you get 3 minus 0, and that's your answer 3. Coming to the next element A12, -1 raised to 1 plus 2 into M12. Now this element is lying in the first row second column, so we cover that. So you get determinant of these 4 elements. Okay, so if you expand it, you get 2 plus 10 हो जाएगा, because minus minus becomes plus, and you get -1 into 12, which is -12. Coming to the element A13, cofactor is given by -1 raised to 1 plus 3 into its minor. Minor is obtained by covering the first row and the third column. तो इनका जो determinant मिलेगा वो ये है. So if you expand, you get 0 plus 6. ये एक्चुअली क्या है? +1. 1 into 6 is 6. Likewise, we find the cofactor of the element A21. Cover the second row and the first column. So you are left with determinant of these 4 elements. Okay. So -1 to 0 1. So -1 raised to 2 plus 1 into determinant of this. So क्या मिलेगा? -1 raised to 3 into -1 minus 0. -1 raised to the power 3 is minus. So -1 into -1, your answer is +1. Likewise, you go for A22, which is -1 raised to 2 plus 2 into, इसका माइनर कौन सा होगा? कवर द सेकेंड रो एंड द सेकेंड कॉलम. सो वी आर गोइंग टू गेट 1 2 -2 1. Okay, so now if you simplify, you get 1 plus 4. So -1 raised to 4 is 1. 1 into 5 is 5. Okay students, so moving ahead with the cofactor of the element A23. So we are going to get -1 raised to 2 plus 3 into M23. Cover the second row and the third column. So you are left with determinant of 1 -1 minus 2 0. So you get -1 raised to 5 into 0 minus 2, which is -1 into -2, which is 2. Clear? Coming to the next element, A31 is given by -1 raised to 3 plus 1 into, cover the first column and the third row. So you are left with determinant of these 4 elements. Okay. So if you simplify, you get -1 raised to 4 into -5 minus 6. So -1 raised to 4 is +1. 1 into -11 is -11. Coming to A32, थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है. ओके, सो यू गेट -1 raised to 3 plus 2 into थर्ड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को कवर कर लो. सो यू आर गेटिंग डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 2 5. सो -1 raised to 5 into 5 minus 4, you get -1 into 1, which is -1. Likewise, the last element A33 is given by -1 raised to 3 plus 3 into M33. M33 means minor of this element, cover the third row and the third column. So you are left with determinant of 1 -1 2 3. So if you simplify, you get -1 raised to 6 into 3 plus 2, which is 1 into 5, which is 5. Simple students, प्रीवियस लेक्चर जैसा ही है, सिर्फ आपको एडजॉइंट ऑफ ए के फॉर्मूला में पुट करना है. Okay students, once you have found all the 9 cofactors, we are going to write the formula for adjoint of A and then put all the corresponding values, and that's how you get your adjoint of A. Okay, so moving to the question number 3, in which you want to verify that A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I. Now students, ये एक फॉर्मूला या तो एक थियरम जैसा है, ये आपको याद रखना है. ये कभी ना कभी आपको MCQ या कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको हेल्प करेगा. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस एज अ फॉर्मूला. ओके, सो वी वांट टू वेरीफाई दिस फॉर्मूला नाउ. सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 3. सो सिंस यू वांट टू फाइंड आउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A, तो पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? एडजॉइंट ऑफ A. ओके, देन वंस यू हैव फाउंड आउट एडजॉइंट ऑफ A, तो हम लोग क्या करेंगे? A इनटू एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, फिर एडजॉइंट ऑफ A इनटू A मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, एंड देन यू आर गोइंग टू सी दिस थर्ड पार्ट विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू I. तो ये तीनों इक्वल प्रूफ करना है आपको. So let's begin with finding the adjoint of A. Okay, so let the given matrix be A. Then you write the formula for the cofactor.
and then likewise you find all the 4 cofactors. Students, I think अभी आपको cofactors find करना बहुत easily आ जाएगा. Okay, so this is how the way you find all the 4 cofactors. So once you have found out all the 4 cofactors, we write the formula for adjoint of A, which is A11, A12, A21 and A22. We put the values. तो अभी हमको क्या मिल चुका है? We have found out adjoint of A. Now we are going to show the multiplication of A into adjoint of A. तो मैट्रिक्स A लिखो, adjoint of A लिखो. यहाँ पे A का ऑर्डर क्या है? 2/2. adjoint of A the order is 2/2. So matrix multiplication is possible and the resulting matrix जो आने वाला है उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा? 2/2. So 2/2 में स्टूडेंट्स you very well remember there are 4 elements. कौन से रहते हैं? A11, A12, A21 and A22. So how do we obtain A11? First row, first column multiply करेंगे. So we get -12 plus 12. Then you are going to say your first row, second column. So you get -6 plus 6. Then you do second row, first column. So you got 24 minus 24. Then you find A22, second row, second column. So you get 12 minus 12. Okay, now we are going to the second term which is adjoint of A into A. तो उनका मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं. तो पहले adjoint of A लिखेंगे, फिर A लिखेंगे. Okay, so we are going to get again a 2/2 matrix as the resultant matrix. So first row, first column कैसे मिलेगा? So you get -12 plus 12. Then first row, second column. So you get -18 plus 18. Then A21 कैसे मिलेगा हमको? Second row, first column. So you get 8 minus 8. And then A22, second row, second column. So you get 12 minus 12. So once again you are getting a 0 matrix. तो ये equation 1 था, ये equation 2 है. Now we move to the third part of the question which is determinant of A into I. Determinant of A means if you remember in the first lecture we already know how to expand the 2/2 determinant. तो क्या मिलेगा हमको? Determinant लिया तो -12 plus 12. So you are getting 0. Now you want to find determinant of A into I. So determinant of A we have already got 0. I means identity matrix of the order 2/2 जो कि है 1 0 0 1. So if you multiply 0 and do scalar multiplication, so you get a 0 matrix of order 2/2. So what do we observe that from 1, 2 and 3, all the 3 terms are having the same values. That's why we have verified the given expression. Clear? Moving to the fourth question, again आपको यही expression verify करना है, but the फर्क इतना है कि ये अभी 3/3 matrix है. तो once again students, what is the first step? We are going to find adjoint of A, और उसके लिए पहले हम सारे cofactors find कर लेंगे. So we begin. Let A is equal to the given matrix. Then you write the formula for Aij, which is -1 raised to I plus j into Mij. Then you go for finding the cofactors. तो A11 कैसे मिलेगा हमको? -1 raised to 1 plus 1 into M11. इसका माइनर कौन सा होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 4 एलिमेंट्स. ओके, सो यू गेट -1 raised to 2 into 0 minus 0 which is 0. A12 क्या आएगा फॉर्मूला में? -1 raised to 1 plus 2 into M12. Minor of the element A12 cover the first row and the second column. So you are left with determinant of these 4 elements. So if you simplify you get -1 raised to 3 into 9 plus 2 हो जाएगा ये. So -1 into 11 which is -11. Coming to the element A13, so we get -1 raised to 1 plus 3 into M13. So cover the first row and the third column. So we get determinant of 3 0 1 0. So if you simplify you get -1 raised to 4 into 0 minus 0. So your final answer is 0. Likewise you can find A21 which is -1 raised to 2 plus 1 into, cover the second row and the first column. So you get determinant of -1 2 0 3. So -1 raised to 3 into -3 minus 0. So -1 into -3 you get the answer as 3. A22 -1 raised to 2 plus 2 into M22. इसका माइनर मतलब 1 2 1 3. So if you simplify you get -1 raised to 4 into 3 minus 2 which is 1 into 1 which is 1. Okay, moving on to finding the cofactor of A23. So you get -1 raised to 2 plus 3 into, cover the second row and the third column. So you get 1 minus 1 1 0. So if you simplify you get -1 raised to 5 into 0 plus 1 which is -1. Okay, so now A31 which is -1 raised to 3 plus 1 into, cover the third row and the first column. So determinant of -1 2 0 minus 2. So we get -1 raised to 4 into 2 minus 0. So 1 into 2 which comes out to be 2. Likewise you can find A32 -1 raised to 3 plus 2 into,
1, 2, 3, minus 2, minus 1 raised to 5 into minus 2, minus 6, which is minus 1 into minus 8, which is 8. And then finally, cofactor of the element A33, which is minus 1 raised to 3 plus 3 into, इसका माइनर क्या रहेगा 1 minus 1 3 0, उसके डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करो. So minus 1 raised to 6 into 0 plus 3, which is 1 into 3, which is 3. Students, we have got all the 9 cofactors. So we write the formula for adjoint of A and put the values. So this is your adjoint of A. Okay students, now we go for the verification part. First we find is A into adjoint of A. So we write the matrix A, we write adjoint of A. This is having order 3 by 3, this is having order 3 by 3. Matrix multiplication is possible and the resulting matrix is going to be of the order 3 by 3. This is going to have 9 elements. Okay, तो A11 कैसे मिलेगा हमको? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो यू गेट 0 plus 11 plus 0. Then A12 first row second column, 3 minus 1 minus 2. Then first row third column, so 2 minus 8 plus 6. Then we move on to second row first column, so you get 0 plus 0 plus 0. And second row second column, so 9 plus 0 plus 2. Then second row third column, so you get 6 plus 0 minus 6. Then third row first column, so you get 0 plus 0 plus 0. And third row second column, so you get 3 plus 0 minus 3. And then finally third row third column, so you get 2 plus 0 plus 9. So we got a matrix of the order 3 by 3. Okay, now we move to the second term of the expression, which is adjoint of A into A. तो पहले adjoint of A लिखो, फिर A लिखो, and then now we perform the matrix multiplication. Again we are going to get a matrix of the resulting order 3 by 3. So let's begin the multiplication. First row first column, so we get 0 plus 9 plus 2. Then first row second column, so 0 plus 0 plus 2. Okay, then A13 first row third column, so we get 0 minus 6 plus 6. Then A21 second row first column, so minus 11 plus 3 plus 8. Then A22 second row second column, so 11 plus 0 plus 0. Then A23 second row third column, so minus 22 minus 2 plus 24. Then A31 third row first column, 0 minus 3 plus 3. A32 we are going to get third row second column, so we get 0 plus 0 plus 0. Then A33 we are going to get third row third column, so we get 0 plus 2 plus 9. So students, if you observe, we have got a matrix of the order 3 by 3. So again, this is your equation number 2. Now we go to the third term of the expression, which is determinant of A into I. So determinant of A, you have very well know, in the first lecture I have told you how to expand it. So you get 1 into, cover the first row and the first column, so we get determinant of, you get 0 minus 0. Then ये plus 1 हो जाएगा, so you cover the first row and the second column, so we get determinant of 9 plus 2. Moving to the third element, ये इसका sign as it is रखो, so you get plus 2, cover the first row and the third column, so you get 0 minus 0. Now determinant of A मिल गया, तो we are going to find determinant of A into I. So which is determinant of A, we got 11, so 11 into identity matrix of the order 3 by 3. We do scalar multiplication, तो हर एक टर्म के साथ multiply हो जाएगा. So we get 11, 0, 0, 0, 11, 0 and 0, 0, 11. So let this be equation number 3. So what do we observe? That from 1, 2 and 3, we have already verified the expression A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I. So students, आज के lecture में इतना ही. In the next lecture, we are going to begin with finding A inverse using adjoint of A. Till then, take care and goodbye.